Now, according to the Bend's rule, more electronegative atoms prefer hybrid orbitals having less s character and more electropositive atoms prefer hybrid orbitals having more s character. So again, this is a type of a rule, okay, and you have to remember this rule. So what rule is saying that if you have a bond between two atoms, okay, so दोनों में से कोई भी अगर आपके पास एक एटम जो है अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ओके, तो इसका मतलब है कि दैट इज गोइंग टू हैव मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, मतलब एस ऑर्बिटल का परसेंटेज उसमें ज्यादा होगा. बट अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो उसके ऊपर जो भी परसेंटेज एस कैरेक्टर है दैट इज गोइंग टू बी लेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव CH2F2, तो यहाँ पे मेरे पास जो ये कंपाउंड है CH2F2, that structure is going to be like this. Carbon, hydrogen tetrahedral होगा, है ना, steric number इसका 4 है. It will be like this. So if I am talking about the bond between fluorine, carbon and fluorine, that means here bond angle will be less than 109.5 degrees. Exactly, अगर कोई भी टेट्राहेड्रल हम ज्योमेट्री ले लें तो उसका अगर मैं CH4 लूँ तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109. बट यहाँ पे फ्लोरीन जो है दैट हैज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि उसके ऊपर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा. और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, इफ यू रिमेंबर हमने स्टार्टिंग में बॉन्ड एंगल का पढ़ा था, इफ परसेंटेज एस कैरेक्टर इज मोर दैट मीन्स उसका जो बॉन्ड एंगल है, या सॉरी अब बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में बात कर लो या बॉन्ड एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर लो, sp का 180 डिग्री था, sp2 का 120 डिग्री था, sp3 का 109 था. तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है वैसे ही उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ते जाएगा. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बॉन्ड एंगल इज लेस. कार्बन के लिए बॉन्ड एंगल लेस होगा क्योंकि ये सेंट्रल एटम है. अगर फ्लोरीन सेंट्रल एटम होता तो उसके लिए बॉन्ड एंगल ज्यादा होता. सो बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109, which states that fluorine has more s character. अगर कार्बन के पास s कैरेक्टर ज्यादा होता तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता. इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट HCH, इनके बीच का अगर मुझे बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करना है दैट मीन इसका जो बॉन्ड एंगल होगा नाउ विल बी मोर than 109.5 degrees, which states that carbon has more s character. ठीक है, that is it will be of course more than 25% of s, बिकॉज अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 है, इसका मतलब है कि 25% s है और 75% p है. बट इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे भी आप कंपेयर कर सकते हो कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है और किसका बॉन्ड एंगल कम है. इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? हाँ, why लिख दो p should have f should have more p character. क्यों?
पी कैरेक्टर एस कैरेक्टर हम कैसे डिफाइन करते हैं? तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो कि फ्लोरीन है तो उसके पास पी कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, क्यों? मैम वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो एस कैरेक्टर कम होगा ना मैम उसके ऊपर। कौन बोला है? मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया है क्या? जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ओके, क्योंकि उतना ही ज्यादा वो क्लोज होता है न्यूक्लियस के, तो जितना ज्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस के उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक, आई थिंक मैंने ये बताया होगा आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर के टाइम पे। चलो एनीवेज, नहीं तो हम इसको ऑर्गेनिक में पढ़ते ही है ये चीज, परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ही जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ही ज्यादा आपके पास एलिमेंट जो होता है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ओके, राइट डाउन दिस फटाफट से। इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल बताओ किसमें ज्यादा होगा? ओ एफ, कैसे कंपेयर किया शुक्र का बॉन्ड एंगल का? आपको सारा केसेस मैंने लिखवाया है अभी, तो हाउ यू हैव कंपेयर्ड इट, व्हाट कॉन्सेप्ट यू हैव अप्लाइड, लेट मी नो। अच्छा, कार्बोनिल क्या होता है? अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, सो दैट टाइप ऑफ ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल। ओके, हेलाइड्स मतलब हैलोजन जुड़े हुए हैं। हाँ, संपदा आपका करेक्ट है, स्निग्धो का करेक्ट है। अभी यहाँ पे देखो, टॉक अबाउट द क्वेश्चन वन, कंपाउंड किस तरीके से होगा? इस तरीके से, एंड टेट्राहेड्रल फॉर्म में होगा, है ना? सेम विल बी द केस ऑफ दिस वन। ऐसे लोन पे यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है, इधर भी ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन है। तो आपको लास्ट क्लास में एक केस बताया था जिसमें ये बोला था कि साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, क्योंकि जब आपका सेंट्रल एटम सेम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे स्टेरिक नंबर 4 है, इसका भी स्टेरिक नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, उससे नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम रहेगी क्योंकि ऑक्सीजन है सेम एटम। तो आपको क्या देखना पड़ेगा? फोर्थ पॉइंट, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल एटम। तो वो पॉइंट क्या बोल रहा था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर का नंबर भी सेम है और सेंट्रल एटम भी सेम है, बट टर्मिनल एटम डिफरेंट है, ओके, देन ग्रेटर द साइज ऑफ टर्मिनल एटम, मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। तो इसका बॉन्ड एंगल समवेयर होता है 111 डिग्रीज और इसका बॉन्ड एंगल होता है 102 डिग्रीज। ऑफ कोर्स वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग। तो बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका होगा? OCl2 का। समझ में आया शुक्तिका? ऑलवेज चेक एवरीथिंग विल बी देयर इन द नोट्स, उसमें से ही देख के सारे केसेस को कंपेयर करके देखो। चलो नेक्स्ट बोल रहा है आपके पास कार्बोनिल हेलाइड्स। आई हैव COF एंड F, COCl एंड Cl, COBr एंड Br, CO I2 एंड I2। अभी डबल बॉन्ड्स को ज्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, ऑफ कोर्स, ओके। तो जो भी आपके पास C डबल बॉन्ड O है, जो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, सेम है,
यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू कंपेयर द टर्मिनल एटम, एंड अगेन टर्मिनल एटम का जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सेम आंसर इज गोइंग टू बी दिस वन। ठीक है एवरीवन। चाहे तो यहाँ पे लिख दो, इंटर एटॉमिक repulsion increases as atomic size of terminal atoms increases. So bond angle increases. Okay. Last topic for this is your some important multi-centered species. यहाँ पे दो ही कंपाउंड्स की बात करेंगे और इसका उनका स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है। सो फर्स्ट वन इज P4O6। P4O6 में क्या होता है कि चारों तरफ आप पहले फॉस्फोरस लगा दो और हर फॉस्फोरस को ऑक्सीजन से ज्वाइन करना है। इसको भी इस तरीके से और यहाँ पे भी। So this is your structure of P4O6। यहाँ पे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो सारे के सारे ऑक्सीजन जो है वो सॉरी सारे के सारे फॉस्फोरस दे आर sp3 हाइब्रिडाइज। एक लोन पेयर होगा यहाँ पे, you can say that this is sp3 and for all। इसमें लिखो PO bond length shows that the bridging bonds on the edges are 1.65 एंगस्ट्रॉम। जो एजेस पे है आपके ये सब उनका बॉन्ड लेंथ है 1.65 एंगस्ट्रॉम। वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। एंड आर नॉर्मल सिंगल बॉन्ड्स, नॉर्मल सिंगल बॉन्ड्स है, कुछ खास डिफरेंशिएशन नहीं है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो PP बॉन्ड्स। फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है दैट इज P4O10। डायरेक्टली इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स पूछ लेते हैं एग्जाम में। सो फॉर P4O10 अगेन चारों फॉस्फोरस को इस तरीके से अरेंज कर दो। अब क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर बढ़ गया तो ऑफ कोर्स फॉस्फोरस अब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा। तो हर फॉस्फोरस एक एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड देन सबको आपको ज्वाइन कर देना है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो किस किस के बीच में हुआ है, ऑक्सीजन के पाई ऑर्बिटल में, इसलिए हम बोलेंगे इसको पी पाई। और फॉस्फोरस का पी ऑर्बिटल नहीं पार्टिसिपेट करता है, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो ये हो जाएगा पी पाई डी पाई, पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल, दैट इज व्हाई इट इज फॉर्मिंग पी पाई डी पाई, पाई बॉन्ड। इसमें लिख लो, वैल्यूज याद नहीं करना है बट जस्ट डेटा लिख लो। पीओ
हाँ हाँ क्रिश, ऐसे टेढ़े मेढ़े ही बनाने हैं। एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लेना, वैसे तो ऐसे ही होता है। द पीओ bond length shows that the bridging bonds on the edges are 1.60 angstrom, but the P double bond O bonds on the corners are 1.43 angstrom, and this P double bond O is formed by P pi D pi बैक बॉन्डिंग। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम बैक बॉन्डिंग की बात करेंगे। ओके, अ फुल p orbital full p orbital on the oxygen atom overlaps sideways with an empty d orbital on the phosphorus atom. The bond angle POP is, ये normal वाले POP single bond वाले, 127 degrees, and there is no p bonds. ओके, इस पूरे मॉलिक्यूल में अगर हम टोटल लोन पेयर की बात करें तो वो 20 होगा, और टोटल नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड्स की बात करें तो वो 4 होगा। ऑफ कोर्स 4 के साथ बॉन्ड होता है। तो फॉस्फोरस का जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल इस शेप का होता है, वो खाली है, और ऑक्सीजन ने एक तो सिग्मा बॉन्ड कर लिया है, दूसरा वो क्या करता है, इस तरीके से ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। तो दिस इज नोन एज, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल है पी पाई, and for phosphorus this is d orbital, so this is d pi, so this is known as p pi d pi overlapping. Understood? Okay, लिखो जल्दी से। Okay, fine. Next topic is your back bonding. Now what is back bonding? तो इसमें लिख लो, back bonding generally take place when out of two bonded atoms, one of the atom
has vacant orbital. Generally, bracket में, I'll explain it, अभी लिख लो. Generally, this atom is from second or third period, and the other bonded atom is having some non-bonded means lone pair की बात हो रही है, electron pair. Generally, this atom is from second period. Back bonding increases the ये increases का sign है, okay? Back bonding increases the bond strength and decreases के लिए ये वाला sign यूज कर रहे हैं, and decreases the bond length. ठीक है, अभी जो भी ये लिखा है मैं एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, सो यूजुअली क्या होता है कि हम, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया BF3 का, तो मुझे पता है कि बोरॉन और इस तरीके से फ्लोरीन, इसका स्टेरिक नंबर 3 है, एंड दिस इज हाउ दे विल बी फॉर्मिंग अ बॉन्ड. सबका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री. बट यहाँ पे एक चीज ये होती है कि अगर मैं बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. एक्साइटेड स्टेट में ये उठ के यहाँ चले जाता है. ये 3 बचे वो किसके साथ बॉन्डिंग करते हैं, फ्लोरीन के साथ. ओके, नाउ एक p ऑर्बिटल क्या है, खाली है. तो यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है कि फ्लोरीन ने एक नॉर्मल बॉन्ड तो कर लिया यहाँ पे, दैट फ्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर्स भी प्रेजेंट है. ओके, तो इसके ये जो p ऑर्बिटल जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखना चाहें तो एटॉमिक नंबर इज 9, 1s2 2s2 2p5. तो वैलेंस में इट इज लाइक दिस, और इसने बोरॉन के साथ कर लिया है बॉन्ड फॉर्मेशन. बट ये जो इसका p ऑर्बिटल है ये फिल्ड है, तो यहाँ पे जो इसके लोन पेयर प्रेजेंट है वो बोरॉन के जो खाली p ऑर्बिटल है यहाँ पे उसके साथ बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं. बैक बॉन्डिंग, ये डबल मत बनाना, डबल का मतलब ये नहीं है कि 2 बार बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. जस्ट लाइक कि इनके इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स मूविंग इधर से इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कोई ऐसा स्पेशली नहीं कि वो एक जगह बैठ के रहेगा, वो इट कीप्स ऑन कंटिन्यूअसली मूविंग. तो उसको अगर जरा भी कहीं भी छोटी मोटी जगह मिल गई तो इट कीप्स ऑन मूविंग. तो इस तरीके से फ्लोरीन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर्स है, वो वैसे तो बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड हुआ, बट ये क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, इसको बैक बॉन्डिंग, मतलब यूजुअली फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करना चाहता, बट इस केस में खाली जगह उसको दिख रही थी तो उसने डोनेट कर दिया. तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज बैक बॉन्डिंग. इज इट क्लियर? जिसकी वजह से, ओके, ड्यू टू दिस, जो कि नॉर्मल बॉन्ड लेंथ होना चाहिए था बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में, अब वो नहीं रहता है. ओके, इट्स बॉन्ड लेंथ बिकम्स डिक्रीजेस एंड इट्स स्ट्रेंथ बिकम्स मोर. बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा. तो यहाँ पे नीचे लिख लो, डिक्रीज इन BF bond length is due to delocalized p-pi bonding between
filled p orbital, p का जो filled p orbital है of fluorine atom and vacant p orbital of boron atom. इसको हम बोलते हैं p पाई p पाई p पाई क्यों? इसका भी p ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसका भी p ऑर्बिटल यूज हो रहा है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें. The extent of back bonding is much larger if involved in back bonding are of same size. ठीक है, साइज अगर ऑलमोस्ट सिमिलर होगा तो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट भी ज्यादा होगा बिकॉज ओवरलैपिंग प्रॉपर होगी. फॉर एग्जाम्पल, the extent of back bonding in boron trihalides is as follows. जैसे मैं अगर कंपेयर करूँ BF3 में, तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग BF3 में ज्यादा होगा बिकॉज बोरॉन एंड फ्लोरीन के साइज में ज्यादा डिफरेंस है नहीं. देन BCl3 and then of course BR3. Okay. Next point लिखो. The extent of back bonding decreases if atom having vacant orbitals is also having some non-bonded electron pairs on it. So, among the atoms of third period, the extent of back bonding follows the order silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. So what this statement is trying to say that कि आपका जो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो डिक्रीज करेगा अगर जो भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ओके, उसके पास खुद के पास भी कुछ लोन पेयर प्रेजेंट हो. जैसे मैं बात करूं सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. सिलिकॉन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर. इट हैज 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड 3 लोन पेयर. तो अगर मुझे कंपेयर करना है कि सिलिकॉन किसी के साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा है, SiF4 में बना रही हूँ, ओके, तो सिलिकॉन के पास खुद के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो भी उसका वेकेंट ऑर्बिटल होगा वो फ्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग इजीली कर सकता है. बट अगर मान लो फॉस्फोरस के साथ कर रही हूँ जिसके पास खुद भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा. अब खुद के पास घर पे खाना बना हुआ है तो बाहर से खाना नहीं खाओगे आप. इट्स द सेम थिंग कि फॉस्फोरस में के पास खुद के पास लोन पेयर है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना इतना इजीली पसंद नहीं करता है. तो अगर जो एटम बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, वेकेंट ऑर्बिटल की बात हो रही है, फ्लोरीन की नहीं, फ्लोरीन के पास तो फिल्ड पी ऑर्बिटल है, वो एटम जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है उसके पास अगर खुद के भी पास एक खुद का इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, देन बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट इज गोइंग टू डिक्रीज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज
the extent of p pi overlapping is inversely proportional to the Lewis acid character. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट. अगर हमें ऐसा कुछ कंपैरिजन करने को आ जाए कि उसका ल्यूइस एसिड से हम कंपेयर कर सकते हैं, देन उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इनवर्सली रिलेटेड होगा. राइट डाउन दिस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट. Okay, chalo. Let's do one question. Compare BF bond length in BF3 and BF4 minus. बताओ किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा. एक आपके पास BF3 है और एक आपके पास BF4 है, which has longer bond length. ना टाइम लग रहा है आंसर करने में. Yes, Sampada, your answer is correct. What about rest of the students? Harsh, Harshan, Maurya, tell me your answer. Dhruv, Chinmay, Abhilash, Krish. Don't make me ask you again and again. Shrutika, Yash, Sohan, Neha. Tell me whose bond length will be more. You people can't hear me. Neha, Maurya, you people can't hear me. Let me know. Are you there in class? And you don't know the answer, then that's okay. But let me know you're there in class. Dhruv, Chinmay, Bhavna, let me know. What is the answer? नहीं आ रहा है तो वो भी बताओ कि मैम नहीं आ रहा हमको. मौर्य, आपका आंसर गलत है. BF3 का ज्यादा होगा या कम होगा चिन्मय? यू हैव टू लेट मी नो. क्या बोल रहे हो? कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ, किसका ज्यादा है, BF3 और BF4? अब ऑफ कोर्स BF3 की अगर हम बात कर रहे हैं, रेणुका गलत है. BF3 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, स्टेरिक नंबर 3 होता है, कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का ज्योमेट्री आएगा. BF4 का स्टेरिक नंबर 4 है, तो ऑफ कोर्स जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. अच्छा, अभी बोरॉन के पास बोरॉन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसके मतलब डज नॉट हैव एनी वेकेंट ऑर्बिटल. ओके, इसके पास कोई भी वेकेंट या फिर तुम बोलो खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है. बट यहाँ पे अभी भी एक खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है. तो जो फ्लोरीन का फिल्ड p ऑर्बिटल है वो इसके साथ बैक बॉन्डिंग करेगा. तो यहाँ पे आप लिखोगे बैक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस.
और अगर बैक बॉन्डिंग होगा दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज। ओके, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज नहीं होगा। सो यहाँ पे लिख लो एज बैक बॉन्डिंग is not possible, so bond length will remain same. Very simple question, still most of you have done it wrong. अभी just ऊपर बताया कि bond length कम हो जाएगा, back bonding होगी, same example लेके बताया, still you people can't do this question, very disappointing. I don't know what you people do, सुनते नहीं हो क्लास में बैठ के, आधे बच्चे क्लास नहीं अटेंड करते, आधे बच्चे आधे आधे घंटे बाद आते हो क्लास अटेंड करने. It's so not acceptable at all. It's taking all those things which you see on the social media, no, like not attending the class or doing this seems quite cool, but that's not cool. Now explain all boron trihalides are Lewis acids, and also explain their order. Okay, question is saying that कि जो भी boron trihalides हैं, that is BF3, BCl3, BBr3, BI3 होता है. So BBr3 तक ही आपको बताना है कि how these trihalides are Lewis acids and उनके Lewis acidity का order, मतलब कौन Lewis acid ज्यादा strong होगा, कौन Lewis acid कम strong होगा. Can you people approach the question? कुछ समझ में आ रहा है question क्या बोल रहा है? Okay, Snigdha, your answer is right. चलो देखो इधर. What is Lewis acid? Lewis acid का definition होता है कि acidity define कर दो. So more easily or more efficiently an atom can accept the lone pairs, that is known as Lewis acidity. Okay. So first of all, species which can accept electrons will be called as Lewis acids. As simple as that. अब अगर हम बात करें BF3, BCl3 और BBr3, तीनों के केसेस में बोरॉन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल खाली है. अगर वेकेंट ऑर्बिटल खाली है तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं. सो दे ऑल कैन एक्ट एज अ ल्यूविस एसिड. बस अब आपको ये बताना है कि कौन अच्छा ल्यूविस एसिड है, कौन बेकार ल्यूविस एसिड है. ओके, वी हैव हियर BF3, BCl3 and BBr3. इसका स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेते हैं. इट इज लाइक दिस. Fine. So
इसके पास भी खाली जगह है, इसके पास भी खाली p ऑर्बिटल है, इसके पास भी खाली p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास भी p, यहाँ पे 2p में है, यहाँ पे 3p में है, और बोरॉन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है 4p में। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी ऑफ कोर्स, इधर भी बैक बॉन्डिंग टेक प्लेस करेगी, यहाँ पे भी टेक प्लेस करेगी। तो बैक बॉन्डिंग का अगर मैं ऑर्डर पूछूं आपसे, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे देन BCl3 में एंड BBr3 में, तो जितना ज्यादा अच्छे से बैक बॉन्डिंग हो रही है उसमें, उतना ही मुश्किल होगा उसको किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। जब हम ल्यूविस एसिडिटी डिफाइन करते हैं, तो वो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट कर सकते हैं, किससे, किसी और से, किसी बेस से, ल्यूविस बेस से, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तो ये खुद ही आपस में इलेक्ट्रॉन लिए जा रहा है, और जब खुद ही आपस में इलेक्ट्रॉन लिए जा रहा है तो दूसरे से थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स ले पाएगा, तो उसकी एसिडिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे अब ल्यूविस एसिड ऑर्डर बताऊं, सो दैट इज गोइंग टू बी BF3 का सबसे कम, बिकॉज उसमें खुद की बैक बॉन्डिंग हो रही है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा वो, देन BCl3 एंड देन BBr। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई सिलाइल amine is a planar molecular and does not act as a Lewis base, while trimethyl is a pyramidal and act as Lewis base. Explain it. मैं स्ट्रक्चर बता दे रही हूँ, तो स्ट्रक्चर नहीं पता होगा आप लोगों को। Tricylyl amine is like this: nitrogen, SiH3, SiH3 and SiH3, और यहाँ पे ट्राईमिथाइल amine कर लो। Trimethyl amine will be like this. Tell me the answer. Okay, चलो। Fine. So what the question is saying that अगर मैं tricylyl amine ले लूँ, this which is this compound, this is tricylyl amine, ये planar molecule है and does not act as an Lewis base. Lewis base की तरह काम नहीं करता। जबकि मैं ट्राईमिथाइल अमाइन ले लूँ, तो उसका पिरामिडल शेप होता है, वो Lewis base की तरह एक्ट करता है। And they are asking you why.
ओके, अभी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा यहाँ पे भी और इधर भी, और कार्ब यहाँ पे सिलिकॉन के पास प्रेजेंट होता है वेकेंट ऑर्बिटल. Okay, silicon has the vacant orbital and that is your vacant d orbital. कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन आता है, कार्बन एंड देन सिलिकॉन. तो कार्बन के पास खाली जगह ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है सेम एनर्जी पे, बिकॉज इसका टू पी है ना, तो ये एक्सपैंड होके अपना ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं. दे डोंट हैव एनी वेकेंट ऑर्बिटल. सिलिकॉन की बात करें तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा. तो 3p2 के बाद एक 3d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है. इस 3d ऑर्बिटल में ये कर लेता है बैक बॉन्डिंग, और तीनों में से किसी में भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में कर रहा है. इट कैन गो ऑन टू एनी ऑफ दी सिलिकॉन ऑर्बिटल. सो इसीलिए दिस डॉटेड लाइन विल बी फॉर ऑल दीज थ्री काइंड्स ऑफ सिलिकॉन. सो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, बैक बॉन्डिंग इज हैपनिंग. एंड बैक बॉन्डिंग होने की वजह से they no longer form the pyramidal shape, but it will be planar in nature. And since lone pair is involved in back bonding, it is not going to act as a Lewis base. What is the definition of a Lewis base? That means species which can donate lone pairs or electrons. Those species which can donate electrons. So the nitrogen here do have the lone pairs, but it is going for the back bonding in silicon d orbital. But in this case, since carbon does not have vacant orbital, so it will not go for back bonding. That is why it can act as a Lewis base, because the lone pairs are available for the donation. Okay. Yes, Snigdha, you can say that. More the back bonding, less will be the Lewis base character. Okay, write down this. The next question I am giving you for homework. Silyl isocyanate, that is SiH3NCO, is linear, but CH3NCO is bent. Explain. Okay, मैं structure बता देती हूँ. N double bond, C double bond. Here you have SiH3. In this case, N double bond, C double bond, O, CH3. You have to do this question for homework. Next topic is electron deficient bonding. Okay, so in this, first write down a Lewis acid is an electron pair acceptor, and Lewis base is electron pair donor. So this is a normal definition. Let's take the example here. I am taking the example of ammonia. Ammonia is NH3 and it has one lone pair present in it. And I am taking this H plus ion. Since this ammonia has the lone pair, so therefore it is going to act as a base. For that matter, Lewis base. And here H plus ion, that means they are electron deficient species. They have less electrons. That means they are going to act as an acid and Lewis acid. So what is going to happen? This lone pair, nitrogen,
here. It is going to donate its lone pair to this proton. So they will form this kind of bonding. And there will be a positive charge. This positive charge is actually on the nitrogen atom because it has given its lone pair. Not completely, only one electron to hydrogen and one electron to itself. And that is how they have formed the bond. So write down here, proton is a Lewis acid and ammonia is Lewis base. Since the lone pair of electron of the nitrogen atom can be donated to the proton. Okay, simple. So this is about your Lewis acid and Lewis base. Next, little bit we'll talk about the coordinate bond. A bond in which sharing of electron pair electron, in which sharing of a pair of electron between two atoms where both electrons originate from one atom. दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही एटम से जा रहे हैं एंड नन फ्रॉम द अदर. दूसरे का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में. Is called as coordinate bond. This is also known as dative bond. So what is going to happen here? Nitrogen, here it is forming the bond with hydrogen, again with hydrogen, and here also hydrogen. And this is your lone pair. This is your H plus ion, which does not have any electrons. So here this is not showing any involvement of its electron because it does not have any electron. So that is why we draw it like this. And this. So this is a type of coordinate bond because nitrogen has given its one electron to the hydrogen. I can take another example also. Again, I have ammonia here, and this side I have BF3. And you know that boron has a vacant orbital. Okay, खाली जगह है उसके पास p orbital. So this ammonia is going to donate its electrons to this boron. So यहाँ पे back bonding नहीं हो रही है क्योंकि किसी और atom से वो electron ले रहा है. So this is a type of coordinate bond formation. Write down this. Done writing? So now we will be talking about electron deficient bonding.
So there are many compounds. Write down, then I will explain. There are many compounds in which some electron deficient bonds are present. Apart from normal covalent bonds or coordinate bonds, which are 2C का मतलब है टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. These electron deficient bonds have less number of electrons than the expected, such as 3 center, 2 electrons bonds. तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं वो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं. जैसे हमने कोवलेंट बॉन्ड किया, दो सेंटर, दो टू सेंटर मींस टू एटम्स and their two electrons are involved. But in the case, there are some compounds which have less number of electrons than it should have usually. For example, 3 center, that means there will be 3 atoms, but the number of electrons will be 2 only. Okay, so 3 center 2 electron bonds present in diborane. Diborane is B2H6. Then you have Al2CH3 whole 6. BeH2, solid PRI, the bridging metal carbonates. We'll talk about all these things. Okay, so what they mean is, अगर मैं bond form कर रही हूँ, let's say कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में इस तरीके से बॉन्ड है, ये किस टाइप का बॉन्ड हुआ? अगर सिर्फ इस बॉन्ड को हम कंसीडर कर रहे हैं, आई हैव टू सेंटर, वन कार्बन एंड वन हाइड्रोजन, दिस इज नोन एज टू सेंटर. और कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व है? टू इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर नॉर्मल बॉन्ड्स. इवन अगर मैं अमोनिया का हाइड्रोजन के साथ भी ले रही हूँ लाइक दिस, ओके, तो अमोनिया के पास दो इलेक्ट्रॉन्स थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो अगेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, these are two center और electrons involved कितने हैं? 2 electrons. So this is a coordinate bond and this is a covalent bond. In both these cases, 2 center and 2 electrons are involved, but there will be few examples where this condition is not taking place, and these are your special types of bonding and they are known as electron deficient bonding. So now we will make a table here. Write down this first. Okay, so here we have, you have to draw this table.
and we'll be talking about examples, their bridging, hybridization, whether the compound is planar or non-planar, and their structure. So I am taking the first example, which is very important, is B2H6. Okay, so the bridge formed here is 3 center and 2 electron. Center 3 ही होते हैं, but the number of electrons involved is 2. Hybridization होता है sp3. सेंटर में जो भी एटम होगा, 3 सेंटर है ना, 3 सेंटर्स होंगे, तो सेंटर वाले का S और अगेन साइड वाले का sp3. कंपाउंड होता है आपके पास नॉन प्लेनर, और जो इसका स्ट्रक्चर है इट इज लाइक दिस, जैसे बी बी. ये जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है लाइक दिस, विच इज नॉट अ नॉर्मल बॉन्ड. हाइड्रोजन 2 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है नॉर्मली, बट इस केस में वो करता है. सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस. अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर की हम यहाँ पे बात करें, ये हो गया बोरॉन, यहाँ पे हो गया बोरॉन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, अगेन hydrogen, hydrogen, hydrogen and hydrogen. So they are forming a bond between this one and again ये boron इसके साथ भी, इस हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता है. ऑल टुगेदर सेंटर है यहाँ पे, यहाँ पे भी लिख लो, इसका जो बॉन्ड एंगल है इसको θ1 बोलते हैं. whatever the bond angle present here is, write down this. And in this write down नीचे B2H6 have 4 2 center 2 electron bonds. ये वाले जो सारे bonds हैं टर्मिनल वाले, they are 2 center 2 electron bonds and 2 3 center 2 electron bonds. Bridging bonds have larger bond length. ब्रिज टाइप का फॉर्म करे तो उनका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, लार्जर होने वाला है देन टर्मिनल बॉन्ड्स. टर्मिनल पे जो बी और एच के बीच का बॉन्ड है वो, its bond length is going to be lesser as compared to the one which is present at the bridge. Angle between terminal bonds is more than angle between bridging bonds. यहाँ पे जो भी let's say ये θ2 है, तो θ2 will be greater than θ1. Write down this. तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे एरिया में घूम रहे हैं. 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है और वो पूरे इस एरिया में घूम रहे हैं. देयर इज नॉट अ फिक्स्ड पोजीशन, देयरफॉर इट इज नोन एज अ ब्रिज बॉन्डिंग, और हम इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन. दिस इज आल्सो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, ध्यान रखना है कंपाउंड नॉन प्लेनर होता है. नॉन प्लेनर इन द सेंस कि अगर मैं इसको प्लेन में कंसिडर कर रही हूँ, इफ दीज आर इन प्लेन, दैट मीन्स ये जो ब्रिजिंग बॉन्डिंग है दैट इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन. ओके,